India is in the forefront of social policy. And many people forget that, to recognize that, because we are quite mesmerized by the wonderful achievements on the economic front of this country. Tremendous economic prosperity and progress. But the human development idea and the MDG says that's not enough. The newspapers cannot just cover the growth story of India. You also have to look at what is happening to the lives of people. Can we confidently stand up and say the environment is better in India? Can we confidently stand up and say the quality of schooling has improved? Can India confidently stand up and say that the access to drinking water is much better? Because progress in society has to be judged by these indicators of human development. प्रधान होने का मतलब क्या है? प्रधान होने का मतलब है मेरे गांव की गरीबी दूर हो, मैं जन जन तक पहुंचूं, सबका सेवा करूं, ख्याल करूं, मेरे गांव में क्या चीज़ की ज़रूरत है और उसको न्याय पंचायत से दिलवाऊं. In order to distribute the benefits of economic growth more equitably, in 2005, the Indian government passed the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and consequently launched an ambitious program that would provide a legal guarantee for 100 days of employment every year at the statutory minimum wage to all adult members of all rural households that were willing to work in development schemes beneficial to their communities. Employment Guarantee Act is an act that gives people a right to being employed on local public works within 15 days. If they apply for work and if they don't get employment, then they have to be given an unemployment allowance. It's a very progressive legislation, very unique actually, which was a bit of a political miracle. Our team visited a village in Varanasi, a town located in the northern Indian state of Uttar Pradesh. Here, a local NGO called the Mahila Swarojgar Samiti, or MSS, has been raising awareness amongst village women, organizing self-help groups, conducting leadership skills training, and helping women access NREGA, the Rural Employment Guarantee Scheme launched by the Indian government. जैसा कि हमारे भारतीय संविधान ने निश्चित किया है कि नरेगा में महिलाओं की 33% भागीदारी होनी चाहिए और वो शायद जीता जागता उदाहरण आपको नमरखौना की ग्राम पंचायत में दिख रहा है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें काम करने वाली महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है. We interviewed some women in this village and asked them how their lives had changed after working in NREGA and with NGOs like the MSS. पैसा निकाल के लेके घरे आवल जाला तो बहुत कुछ काम कर लेवल जाला. उससे लड़कन के ई भल की प्राइमरी में पढ़ा के छोड़ दा, पैसा नहीं बा, कैसे अब भारी स्कूल में पढ़ावन जाई. तो हमने बोली कि हमने अपने आदमी से तू बच्चन का खर्चा चलाओ, हमने नरेगा में काम करब तो हमने अपने बच्चन के पढ़ाई. अरे बहुत आगल, अब इतना हो गल कि तहाँ के खाद पियत ना रहो, खत दवाई के नहीं रहल, तहाँ बोला डोला के बा वहाँ तनी पढ़े तो नहीं बा एको तक हमने. बाकी प्रधान लोग के थोड़ा बहुत छुगा देवल जा. It's a law, it's not just a scheme, it's a legal right. And I think it could really have wonderful effects, not just in terms of providing security. I mean, the first objective, of course, is to provide some kind of social security to people, but it can also bring about a lot of very interesting social, economic and political change because it reduces migration, because it is implemented through local institutions that have a new lease of life through this law, because it helps women to come out of the household and to become part of the public sphere. लेकिन अगर हम सब चैलेंजेस तो ये हैं कि घर से बाहर निकलना महिलाओं का, यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज तक वो घूंघट में रही हैं, जो हमारा भारतीय संस्कृति है. तो उनसे घर से बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है. कभी हमने घर के बाहर निकलना नहीं भी तो कहाँ जाना कि का होला बाहर का दुनिया, तो उसमें तो हमने के पता नहीं कैसे लोग बा. हमने का कहीं पैसा जमा करल जाता लेके भागो न जा. उसमें नहीं इतना तक कि कितना बार ये लोग हमने मना कैले पर भी आवत रह गइलन. तो हमने के ये लोग अपने फायदा बदे आवलन. हमने का कर अपन समय बर्बाद करल जा, काम कर ली, चूल्हा चौकी की इनकर बात सुन ली. बाकी मना कैले पर नहीं मानते न, फिर बार बार आवा से हमने का थोड़ा दिमाग जैसे ये समझ में आल कि नहीं जौन ये लोगन कहते हैं वो सही है. ओकर बाद हमने समूह बना ले गल भैया, समूह बना ले गल छोटा मोटा हमने के समूह में पैसा भी आ गल. फिर वहाँ से भैया हमने के एक नारी संघ बनल. नारी संघ जब बनल भैया तो हमने शक्ति जो है बढ़ गई वहाँ से.
हमने के तब वो समय ही लगल कि हमने शायद अपने जौन चार दीवारी की ज़िंदगी से बाहर निकल के ये दुनिया में हमने के थोड़ा सा अपनी मर्जी से जिए का हक भी मिलल और दूसरे के भी वो हक दियाव का हक मिलल और सब औरत के अपनी मर्जी से जिए का समझ हो जा। उनके अंदर जब एक लीडरशिप आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता, तब उनको पता चलता है कि नरेगा एक कानून है जिसमें हमारा सहयोग करना और अब उससे और उसमें जिसकी ज़रूरतें हैं वो हक पाना भी जिम्मेदारी एज ए पंचायत के नागरिक होने के नाते महिलाओं की भी ड्यूटी बनती है, लोगों की भी ड्यूटी बनती है। But what is distinct about the Employment Guarantee Act are the clauses to ensure better governance and accountability. Social audit, which means it's an audit by people of the functioning of the program, is mandatory. So anyone can now, in fact the government is also actively encouraging social audits. Groups of people can go into a village, ask for the accounts, call a public meeting and ask people, were you paid the wages that you were assured? You were supposed to get 100 days of work, are you getting it? Were you offered a job when you went to ask for it? And so it's making a huge difference. The Narega Employment Guarantee Scheme has been surrounded by criticisms and controversies around mismanagement, poor effectiveness, and its limited impact on the drivers of poverty. And if the program is well implemented, you could really transform the whole rural economy of Jharkhand through that. On the other hand, the reality, I mean, Jharkhand is one of the most corrupt and criminalized states of India, and the reality, the ground realities of this Employment Guarantee Act in Jharkhand are really quite dismal. 90% ठेकेदारी उन्हीं के पास है. While it is easy to find people who say that better programs could be designed, it is not as easy to find people who can actually design and enforce these programs effectively. My feeling is that if the workers organize and form strong organizations, then they will be able to save the program and to make it work, and that's really the big opportunity in the future. उसकी सफलता यही है कि पहले ऑर्गेनाइज किया गया और उनकी ज़रूरतें देखी गई और उनकी नॉलेज बिल्डिंग की गई, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, तब उनके अंदर एक लीडरशिप आई और उनको पता है कि इस कानून में ये लिखा है और मुझको ये ऐसे मिलेगा. And I really believe that in India there's a huge democratic space that can be used much more than it is used at the moment to bring about that kind of change. So basically I see myself as being a small part of all that, and that's where things like academic research, influencing policymakers and being part of social movements all come together. That's where my heart is.